Assalamu alaikum and welcome. So now we are starting Act 4 of the Crucible. So the Crucible is by Arthur Miller, and so far we have seen that there has been a huge mistake by the end of the code, that they are misled, and a simple dancing is converted into witch hunt. So many people are hanged for the same reason. So now the final act comes. So this is a cell in Salem jail that fall. यानी उसी सितंबर अक्टूबर यानी खजां के मौसम में ये एक सेल, एक तहखाना है. At the back is a high barred window. Near it, a great heavy door, along with the walls with two benches. The place is in the darkness, but for the moonlight seeping through the bars, it appears empty. Presently, footsteps are heard coming down a corridor beyond the wall. Keys rattle and the door swings open. Marshal Herrick enters with a lantern. He's nearly drunk and heavy-footed. He goes to a bench and nudges a bundle of rags lying on it. Herrick, Sarah, wake up, Sarah Good. He then crosses two other benches. Sarah Good, rising in her rags. Oh, Majesty, come in, come in. Chituba, he's here. His Majesty's come. Herrick, go to the north cell. This place is wanted now. He hangs his lantern on the wall. Tituba sits up. Tituba, they don't look like to me His Majesty. Looks to me like the Marshal. कि अब वो Majesty किसको कह रहे हैं? वो अपने तौर पे लगे हुए हैं कि जी डेवल आ गया हमें बचाने के लिए. ठीक है, हालांकि they do not believe in devil, but still they are saying so. क्योंकि उन पे इल्जाम इस चीज का लगा है. So Tituba क्यों पकड़ी गई? क्योंकि Tituba जो है जो कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज स्टार्टेड विद Tituba, तो इसको उन्होंने अंदर इसी वजह से डाल दिया जेल में, क्योंकि जो विच क्राफ्ट है उसने इनिशिएट यहाँ से किया Tituba से, तो उसको उन्हें डालना पड़ा. Herrick taking out a flask. Get along with you now, clear this place. It winks, and Sarah Good comes and peers up into his face. Oh, it is you, Marshal. I thought sure you be the devil coming for us. Would I have a sip of cider for me going away? क्या मैं शिफ्ट कर रहे हो एक जगह से दूसरी जगह, तो क्या मुझे भी थोड़ा सा ये एप्पल जूस दोगे? Handing her the flask. And where are you off to, Sarah? As Sarah drinks, we're going to Barbados. Soon the devil gets there with the feathers and the wings. Herrick, oh, a happy voyage to you. Sarah, a pair of bluebirds wing sadly. The two of us, or it will be grand transformation, Marshal. She raised the flask to drink again. So taking the flask from her lips, you'd best give me that, or you will never rise off the ground. Come along now. I'll speak to him for you if you desires to come along, Marshal. कि मैं तुम्हारी भी बात करूंगी डेवल से, तुम भी मेरे साथ आना चाहते हो तो आ जाओ. I do not refuse it, Tituba. It is the proper morning to fly into hell. Oh, it be no hell in Barbados. Devil, him be player, man in Barbados. Him be singing and dancing in Barbados. It's you folks. You riles him up round here. It be too cold round here for that old boy. यानी ओल्ड बॉय डेवल हो कह रहा है कि यहाँ उसके लिए ठंड है, वहां पे वो खुश रहेगा, डांस करेगा, नाचेगा. He frees his soul in Massachusetts, but in Barbados is just sweet and the bellowing cow is heard. And Tituba leaps up and calls to window, I said that same Sarah. अचानक एक पेट दर्द से मुब्तला गाय बोलती है, तो वो कहता है ये देखो ये डेवल आ गया. अब इन दोनों का जो दिमागी तवाज़ुन है वो बिगड़ चुका है, इसलिए बैकी बैकी बातें कर रही है. उस पनिशमेंट के बाद, उस सारी एक्टिविटी के बाद, इम्प्रिजनमेंट के बाद. I'm here, Majesty. They hurried, pick up their rags as Hopkins, a guard, enters. The deputy governors arrived, grabbing Tituba. Come along, resisting him. No, he coming for me. I'm going home. Herrick pulling her to the door. That's not Saturn, just a poor old cow with a hatful of milk.
कि वो मे बी दूध उसका निधो हो गया तो इसलिए रो रही है. Come along now, out with you. Calling to the window, Tituba, take me home, devil, take me home. Sarah, following the shouting Tituba out, tell him I'm going to Tituba. Now you tell him Saragood is going too. उसे बताओ Saragood भी मेरे साथ आ रही है. In the corridor outside, Tituba calls on, take me home, devil, devil, take me home. And Hopkins' voice orders her to move. Herrick returns and begins to push old rags and straw into a corner. Hearing footsteps, he turns and enter Danforth and Judge Hawthorne. They're in great coats and wear hats against the bitter cold. They are followed by Shiva, who carries a dispatch case and a flat wooden box containing his writing material. Good morning, Excellency. Danforth, where's Mr. Paris? I'll fetch him. He starts for the door. Marshal. Eric stops. When did Reverend Hale arrive? It was toward midnight, I think. Suspiciously. What is he about here? कि वो क्यों आया? He goes among them, that will hang, sir, and he prays with them. He sits with Goodiness now, and Mr. Paris with him. Mr. Paris भी उसके साथ है. वो हर एक बंदे के पास जा रहा है जो कि condemned हैं, जिनको लटकाया जाना है, और वो उनके साथ बैठ के दुआ मांग रहे हैं. Indeed, that man has no authority to enter here, Marshal. Why have you let him in? Why, Mr. Paris, command me? Sir, I cannot deny him. Are you drunk, Marshal? No, sir. It is a bitter night, and I have no fire here. कि बड़ी ठंडी रात थी, इसलिए मुझे थोड़ी पीनी पड़ी. यहाँ पे आग भी नहीं थी. Containing his anger, fetch Mr. Paris. Aye, sir. There's a prodigious stench in this place. I've only now cleared the people out for you. कि बड़ा अजीब सा यहाँ पे माहौल है, स्मेल है इस एरिया में. तो वो कहता है कि मैंने अभी अभी इस सेल को आपके लिए खाली किया है जहां से उसने टिट्यूबा को और सारागुड को यहाँ से निकाला. Beware hard drink, Marshal. कि इतना ज्यादा सख्त ना पिया करो. Aye, sir. He waits an instant for further orders, but Danforth, in dissatisfaction, turn his back on him, and Harry goes out. There's a pause. Danforth stands in thought. That's your question, Hale. Excellency, I should not be surprised he have been preaching in Andover lately. कि Andover के इलाके में भी इसने preach किया. So Andover वो area है. So during the height of the terror in Salem, a similar hysteria broke out in nearby town of Andover. तो Andover में भी इसी तरह एक false accusation start हो गई. तो ये वहां पे भी गया और वहां भी उसने ऐसी दुआएं की. So Paris prays with him. That's strange. कि Paris उसके साथ मिला हुआ, ये समझ नहीं आ रही. He blows on his hands, moves towards the window and looks out. Hawthorne, Excellency, I wonder if it be wise to let Mr. Paris serve continuously with the prisoner. Danforth turns to him interested. I think sometimes a man has a mad look these days. कि बंदा कई दफा पेरिस जो है ये पागल नजर आता है. तो ये क्या वाइज होगा कि इसको प्रिजनर्स के साथ छोड़ा जाए? Mad? I met him yesterday coming out of his house and I bid him good morning and he wept and went his way. I think it is not well the village sees him so unsteady. कि मैंने इसको देखा, ये अपने घर से निकला और मैंने इसको गुड मॉर्निंग कहा, लेकिन इसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया बल्कि वो रोता हुआ चला गया. तो ये इतना अनस्टडी उसे पहली दफा देखा जा रहा था. Perhaps he have come, he have some sorrow. Maybe उसकी कोई परेशानी है, कोई trouble है. Shiva, stamping his feet against the cold. I think it be the cows, sir. Cows? ये शायद गाय की वजह से. Shiva, there be so many cows wandering the high roads now. The masters are in jail, and much disagreement who they will belong to. I know Mr. Paris be arguing with farmers all yesterday. There's a great contention, sir, about cows. Contention make him weep, sir. It were always a man that weep for contention. He turns as do Hawthorne and Danforth, hearing someone coming up the corridor. Danforth raises his head as Paris enters. He's gone, frightened and sweating in his great coat. So इन्हीं देर में Paris enter होता है. So Paris जो है वो इस वक्त changed है. उसकी चेंज की क्या वजह है कि हैरिक ने तो ये बताया जो उसके बारे में शिवा ने कि
अब चूंकि लोगों का गांव काउस का इशू है, बहुत सारे जो मवेशी हैं उनके मालकान मर चुके हैं या जेल में हैं, तो वो बेयारो मददगार फिर रही हैं, तो उनकी मालकियत के ऊपर या मलकियत के ऊपर इश्यूज बन रहे हैं और लोग पूछ रहे हैं कि ये किसको बिलोंग करती हैं। तो पेरिस इस वजह से परेशान है। मीनवाइल पेरिस को दिया जाता है, Paris Danforth instantly. A good morning, sir. Thank you for coming. I beg your pardon waking you so early. Good morning, Judge Hearthstone. कि आपको मैंने जल्दी उठा दिया. Thank you very much for your arrival. Reverend Hill, I have no right to enter this. कि Reverend Hill यहाँ पे क्यों आए? Excellency and movement. He hurries back and shuts the door. जैसे कोई important बात है. Do you leave him alone with the prisoners? What is business here? Paris. Prayerfully holding up his hand. Excellency, hear me. It is a providence. Reverend Hale has returned to bring Rebecca Nurse to God. कि वो Rebecca Nurse को खुदा के रास्ते पे ले आया. Surprise, he bids her confess. कि उसने confess करा लिया. Sitting, hear me. Rebecca have not given me a word this 3 months since she came. Now she sits with him and her sister and Martha Kore and 2 or 3 others, and he pleads with them, confess their crimes and save their lives. Why, this is indeed providence. And they soften, क्या उनका दिल पिघला? Not yet, but I thought to summon you, sir, that we might think on whether it be not wise to, he dares not to say it. I had thought to put a question, sir, and I hope you will not. कि आप बताएं, इजाजत देंगे तो ऐसा कुछ करेंगे. वो कहता है, Mr. Paris, be plain, what troubles you? मसला क्या है? This is the news, sir, that the court must reckon with my niece, sir. My niece, I believe she has vanished. कि कोर्ट को चाहिए कि थोड़ा सा अपने सोचने के अंदाज को चेंज करे, इस चीज पे रोशनी डाले कि मेरी भांजी यानी मेरी भांजी एबिगेल ये भतीजी जो भी थी इसकी, वो वैनिश हो चुकी है. So vanished means गायब हो चुकी है. Vanished. I had thought to advise you of it earlier in the week, but कि मैं आपको पहले बताना चाहता था लेकिन नहीं बता पाया. Why? How long is she gone? कि कब से गई हुई है? This be the 3rd night. You see, sir, she told me she would stay a night with Mercy Lewis, and next day, when she does not return, I sent to Mr. Lewis to inquire. Mercy told him she would sleep in my house for a night. इन दोनों ने बहाना लगाया कि ये एबिगेल कह गई कि मैं उसके घर रहूंगी और उसने कहा कि मैं इसके घर रहूंगी. They are both gone in fear of him. They are, sir. Alarm. I'll send a party for them. Where may they be? मैं लोग ढूंढूंगा यानी पुलिस भेजूंगा उन्हें ढूंढने के लिए. Excellent. I think they be abroad a ship. Danforth stands the gap. कि परेशान हो जाता है. My daughter tells me how she heard them speaking of ships last week, and tonight I discover my strong box is broken into. Strong box यानी safe जिसमें पैसा रखा जाता है. He presses his fingers against his eyes to keep back tears. कि वो अपनी आंखें बंद करता है, उन्हें दबाता है ताकि आंसू बाहर ना निकले. Astonished, she have robbed you. 31 pound is gone, I'm penniless. He covers his face and sobs. कि 31 पाउंड ले गई और मैं बिल्कुल सड़क पे आ गया. तो 31 पाउंड बड़ी रकम थी उस दौर में, 1695 में. Mr. Paris, you are a brainless man. He walks in, thought, deeply worried, कि तुम बहुत ही पागल इंसान हो. फिर वो ये वॉक करता है परेशानी में. Excellency, a prophet, nothing you should blame me. I cannot think they would run off except they fear to keep in Salem anymore. He's pleading. Mark it, sir. Abigail had close knowledge of the town, and since the news of Andover has broken here, कि एंडोवर की जो न्यूज ब्रेकआउट हुई कि एंडोवर में जो भी हुआ वो फ्रॉड था, वहां पे विच क्राफ्ट नहीं था, तो इस चीज की वजह से और प्लस उसे पता था कि वो ज्यादा देर तक इसको चला नहीं सकती, तो वो निकल गई यहां से. Endeavor is remedied. The court returns there on Friday and will resume examinations
कि लोगों ने अगरचे कोर्ट को ओवरथ्रो कर दिया था, लेकिन वहां पे कोर्ट वापस आ चुकी है. Danforth, there is no, I'm sure of it, sir, but rumors here speaks rebellion in Endeavour. लेकिन यहाँ पे अफवाह यही है कि वहां पे बगावत हो चुकी है. There is no rebellion in Endeavour. I tell you what it is said, sir. मैंने वो बताया जो कि मशहूर है. Endeavour have thrown out the court, they say, and they will have no part of witchcraft. There be affection here, feeding on that news, and I tell you, sir, I fear there will be riot here. कि अगर वो चीज यहाँ पे फैल गई तो यहाँ भी हंगामे शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो कन्विंस हो गया किसी हद तक कि यहाँ भी कोई विच क्राफ्ट नहीं था. इट वॉज ऑल डन बाय एबिगेल और दीज गर्ल्स. राइट. Why at every execution I see not but his satisfaction in the town. कि मैं तो देख रहा हूं कि हर एग्जीक्यूशन के बाद चीजें बेहतर होनी चाहिए और हो रही है. जज हॉथरन, इट वाज द सॉर्ट दैट हैंग टिल नाउ. कि आज तक जितने लोगों को लटकाया गया वो डिफरेंट लोग थे, वो आम पब्लिक थी. Rebecca Nurse is no Bridget that lived 3 years in with Bishop before she married him. कि रेबिका नर्स को ऐसी गुनाहगार फजूल औरत नहीं है जो कि बिशप के साथ 3 साल रही शादी से पहले. ये जॉन प्रॉक्टर इज नॉट एजैक वार्ड दैट ड्रैंक हिज फैमिली टू रून. या वो कोई ऐसा शराबी नहीं है जिसने अपनी फैमिली को तबाह कर दिया हो. ये बड़े यानी इनकी बड़ी फॉलोइंग है इलाके में. So to Danforth, I would to God it were not so excellent, but these people have great weight yet in the town. अभी भी इनको टाउन में माना जाता है. Rebecca Nurse, let Rebecca Nurse stand upon the gibbet. Gibbet यानी वो फांसी का फंदा जो होता है. And send up some righteous prayer, and I fear she will wake a vengeance on you. कि अगर वो फांसी चढ़ गई और उसने कोई बददुआ दे दी तो उसकी बददुआ हम लोगों को छोड़ेगी नहीं. Hawthorne, Excellency, she is condemned a witch, the court have. Hawthorne को आखिरी आग लगी होती है कि भाई उसको हमने एक विच करार दे दिया कोर्ट ने, अब क्या मसला है. Danforth in deep concern, raising a hand to Hawthorne, pray you to Paris. How do you propose then? Excellency, I would postpone this hanging for a time. कि मैं चाहता हूँ कि आप इनको थोड़ी देर के लिए रोक दें. There will be no postponement. ये नहीं रुक सकती. Now Mr. Hills returned his hope, I think, for if he bring even one of these to God, the confession surely damns the others in the public eye, and none may doubt more that they are all linked to hell. This way, unconfessed and claiming innocence, doubts are multiplied. Many honest people will weep for them, and our good purpose is lost in their tears. तो यहाँ पर कह रहे कि जी अगर इनमें से जो साहिल कोशिश कर रहा है कि मार्था कोरे, रेबिका नर्स या एलिजाबेथ प्रॉक्टर, इनमें से किसी एक को अगर वो ले आता है राह रास्त पे तो फिर क्या होगा. यानी उसके कॉन्फेशन. अब हेल क्यों लाना चाह रहा है. हेल इससे ला के अगर इन्होंने की है तो मैं इनको बचा लूं, ये बच जाए, कम से कम जान से हाथ ना धोए. लेकिन बाकियों को क्या इसमें फायदा है कि पब्लिक आई जो है, यानी जो इनकी फेम है, बेसिकली लोग इन्हें मानते हैं. जॉन प्रॉक्टर हो गया या रेबिका नर्स हो गई, मार्था कोरे, लोग उनको अच्छा समझते हैं. तो अगर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया तो लोग उन्हें बुरा समझेंगे और उनकी फॉलोइंग खत्म हो जाएगी. उनको लोग फॉलो करना छोड़ देंगे, उनके बारे में दुआएं करना छोड़ देंगे, या उनके मरने के बाद उन्हें याद करना छोड़ देंगे. लेकिन अगर वो नहीं करते, अनकॉन्फेस रहते हैं और इससे मार दिए जाते हैं, तो लोगों को डाउट होगा कि वाकई अगर ये तीनों कह रहे हैं तो तीनों तो गलत नहीं हो सकते. हाँ, अगर एक एक्सेप्ट कर ले तो बाकी दोनों पे भी शक जा सकता है. तो तीनों कहेंगे, तीनों एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो लोगों को यही रहेगा कि ये सारे इनोसेंट थे और हमारा जो अच्छा कॉज है ईवल को सर्च करने का, वो उनके आंसुओं में बह जाएगा, यानी इसकी कोई परवाह नहीं करेगा. After thinking a movement, then going to Shiva, give me the list. Opens the dispatch case, searches. It cannot be forgot, sir, that when I summoned the congregation for John Proctor excommunication, there were hardly 30 people come to hear it. That speak a discontent, I think. एक्सकम्युनिकेशन होता है कि राब्ता खत्म कर देना, बाहर निकाल देना, जिला वतन कर देना. कि मैंने जब जॉन प्रॉक्टर की विचक्राफ्ट की वजह से उसका कता ताल्लुक करने के लिए आए लोगों को बुलाया
तो सिर्फ 30 लोग आए, यानी पूरे विलेज में से सिर्फ 30 लोग आए, बाकी नहीं आए। तो इसका मतलब है कि बाकी लोग जरूर उसको अच्छा समझते हैं तो वो नहीं आए। स्टार्टिंग द लिस्ट, देयर बी नो पोस्टपोनमेंट। एक्सीलेंसी, कितनों गली नहीं समझ आती। नाउ सर, which of these in your opinion may be brought to God? I'll myself strive with them till dawn. किन में से किसको लेके आना है राय रास्त पे, मैं खुद कोशिश करूंगा। There is no sufficient time till dawn, कि अभी वक्त इतना नहीं है। I'll do my utmost. Which of them do you have hoped for? किसके बारे में तुम उम्मीद रखते हो? Paris, Excellency, a dagger, he chokes. What do you see? Tonight, when I opened my door to leave my house, a dagger clattered to the house. You cannot hang this sword. There is a danger for me. I dare not step outside at night. कि मुझे याद आ गया कि मैंने आज जब बाहर निकला तो मेरे घर के बाहर एक खंजर लगा हुआ था, तो वो मेरी लाइफ खतरे में है, मुझे बाहर नहीं जाना चाहिए। हेल, वो एंटर होता है तो लोग परेशान हो जाते हैं उसे देख के। Danforth, accept my congratulations, Hale. We are glad to see you return to your good work. कि तुम दोबारा अच्छे काम पे लग गए हो, बड़ी अच्छी बात है। हालांकि हेल वो नहीं चाह रहा जो ये चाह रहे हैं। Come into Danforth. You must pardon them. They will not budge. कि तुम्हें उनको पार्डन कर देना चाहिए, माफ कर देना चाहिए। सो हेल के जो इरादे हैं यहाँ पे वो बिल्कुल फ्रेंड वाले हैं। वो उनके साथ बिल्कुल एक डिफरेंट तरह का एक लेवल रखे हुए हैं कि वो उन्हें बचाना चाह रहा है और ये लोग उन्हें चाह रहे हैं कि ये पकड़े जाए। सो यानी अब वो कह रहे जी उनके अंदर जरा भी चेंज नहीं आएगी, दे विल नॉट बर्ज, कुछ भी वो तब्दीली नहीं आएगी उनके बयान में। Danforth, you misunderstand, sir. I cannot pardon these when 12 are already hanged for the same crime. It is not just. अब उसका बयान सुने, उसकी प्ली है जी कि जब एक चीज की वजह से 12 को मैं फांसी दे चुका हूं तो मैं बाकियों को भी दूंगा। अच्छा, वो इस तरफ नहीं जा रहा कि बाकी शायद सही भी हो सकते हैं। वो कह रहा है जी जब 12 टंगे गए तो उनका क्या कसूर था, अब सारों को मैं टंगूंगा। Harris, Rebecca will not confess कि Rebecca नहीं मानी। The sun will rise in a few moments, sir. Excellency, I must have more time. कि मुझे और टाइम चाहिए। Now hear me and beguile yourself no more. कि अपने आप को मजीद धोखा ना दो। I'll not receive a single plea for pardon or postponement. Them that will not confess will hang. 12 are already executed. The names of these 7 are given out, and the village expects to see them die this morning. Postponement now speaks of floundering on my part. कि अगर मैं पोस्टपोन करता हूं जबकि 12 ऑलरेडी हैंग हो चुके हैं, 7 को आज हैंग किया जाना है और नाम विलेज में जा चुके हैं, तो आज मैं अगर रोकता हूं हैंगिंग को तो ये मेरी वीकनेस समझी जाएगी। तो उसे अपना डर पड़ गया, अपनी रेपुटेशन का। Reprieve or pardon must cast doubt upon the guilt of them and died till now. कि अगर इनको पार्डन किया गया या पोस्टपोन किया गया तो जो मर गए शायद उनकी इनोसेंस सामने आना शुरू हो जाए, लोग इस पे डाउट करें। While I speak God's law, I'll not crack its voice with whimpering. If retaliation is your fear, know this: I should hang 10,000 that dare to rise against the law, and an ocean of salt tears could not melt the resolution of the statutes. कि अगर ऐसी बात हुई तो कानून के लिए मैं 10,000 बंदों को भी हैंग कर दूंगा और आंसुओं का समुंदर भी मुझे नहीं रोक पाएगा। Now draw yourselves up like men and help me. और मर्द बनो, मेरी मदद करो। And you're bound by heaven to do this. खुदा तुम्हें हुक्म देता है इस चीज का। Have you spoken with them all, Mr. Hale? All but Proctor. He is in dungeon. सबसे बात कर लिया लेकिन प्रॉक्टर से नहीं, वो जो है वो जिंदान में है, तो वहां तक मेरी अभी एक्सेस नहीं हुई। What's Proctor's way now? He sits like some great bird you don't know he lived, except he will take food from time to time. तो वो सिर्फ कभी कभी खाना खा लेता है वरना वो कुछ भी नहीं करता। His wife must be well on with a child now. उसकी बीवी अब ठीक होगी, बच्चा वगैरह। She is, sir. What do you think, Mr. Paris? You have closer knowledge of this man. Might her presence soften her? कि अगर उसकी बीवी उसके सामने लाए तो क्या उसका दिल पिघलेगा? It is possible, sir. You have not laid eyes on her these 3 months. I should summon her. या मुझे बुलाना चाहिए उसे, 3 महीने से उसने उसे देखा नहीं। To Herrick, is he yet adamant कि अभी तक वो ढीठ हुआ है? Has he struck at you again? He cannot, sir. अब वो नहीं मार सकता. He is chained to the wall now. Danforth,
Fetch Goody Proctor to me. Now let you bring him up. पहले Goody Proctor को बुलाओ और फिर उसको. Aye, sir. Excellency, if you postpone a week and publish to the town that you are striving for the confession, that speak mercy in your report, not faltering. कि अगर आप कह दें कि आप एक हफ्ता पोस्टपोन कर रहे हैं तो ये आपके रहमदिल होने की निशानी होगी, कमजोर होने की नहीं, कि आप उनको माफ करना चाह रहे हैं या आप उनकी मदद करना चाह रहे हैं. Mr. Hale, as God has have not empowered me like Joshua to stop the sun from rising, so I cannot withhold from them the perfection of the punishment. So Joshua, so in the Bible, Joshua, leader of Israelites after the death of Moses, asked God to make the sun and the moon stand still during a battle, and his conquest and his request is granted. तो कह रहा कि मैं वैसा नहीं हूं कि मैं उनकी तरह रिक्वेस्ट कर सकूं और सूरज को राइज करने से रोक सकूं. सो मैं पनिशमेंट और इस परफेक्शन को रोक नहीं सकता. Hard and now, if you think God wills you to raise rebellion, Mr. Danforth, you're mistaken. तुम्हें लगता है कि अगर खुदा ये तुमसे करवा रहा है कि तुम आगे एक लंबी अवाम को अपने खिलाफ करोगे, ज्यादा अवाम को, तो ये तुम्हारी गलतफहमी. Danforth, instantly, you have brought rebellion spoken in the town. You have heard rebellion spoken in the town. क्या तुमने ऐसी बात सुनी है? Hail, Excellency, there be orphans wandering from house to house. कि बच्चे यतीम हो गए हैं जो बेसरो सामान फेर हैं, बेयारो मददगार. Abandoned cattle bellow on the high roads and the stink of rotting crops hangs everywhere. कि जो मवेशी हैं वो भी बेकार फिरी जा रहे हैं, उनको कोई मिल्क करने वाला नहीं है, जो क्रॉप्स हैं वो खराब हो चुकी हैं और उनकी स्मेल फैली हुई है. And no one knows where the harlot's cry will end his life. When the harlots cry, यानी और किसी को नहीं पता कि कब कोई प्रोस्टिट्यूट उस पर इल्जाम लगाए और उसकी जिंदगी खत्म हो जाए. यानी वो एबीगेल की तरफ इशारा करते हुए कह रहा है. And you wonder yet if rebellion spoke, और आप अब हैरान है कि लोगों में रेबिलियन शुरू नहीं हुई. But you should marvel how they do not burn your province. आपको तो ये देखना चाहिए कि उन्होंने अभी तक आपके प्रोविंस को और इस कोर्ट को जला क्यों नहीं दिया. Mr. Hale, have you preached in Andover this month? Thank God, they have no need of me in Andover. Andover में उन्हें मेरी जरूरत नहीं पड़ी. You befell me, sir. Why have you returned there? तुम्हें परेशानी इस बात की तुम वापस क्यों आए हो? Well, it is all simple. I come to do the devil's work. I come to counsel Christians. They should belie themselves. His sarcasm collapsed. There's a blood on my head. Can you not see the blood on my head? कि जो खून मेरे सर पे है, जिस मेरी उस तस्दीक की वजह से कुछ बंदों को टेस्टिफाई किया गया मर गए, मैं वो दाग धोने आया हूँ. Hush. So isn't it Elizabeth आती है, Danforth, Goody Proctor. She's silent. I hope you're hearty. Elizabeth, I'm yet 6 months before my time. क्या अभी डिलीवरी नहीं हुई? Pray, be at your ease. We come not for your life. हम मारने नहीं लगे तुम्हें. Mr. Hale, will you speak to the women? Hale, Goody Proctor, your husband is marked to hang this morning. कि तुम्हारा बंदा आज सुबह लटका दिया जाएगा. Quietly, I have heard it. You know, do you not that I have no connection with the code? I come of my own, Goody Proctor. I would save your husband's life, for if he is taken, I count myself his murderer. Do you understand me? कि मेरा इस कोर्ट से कोई ताल्लुक नहीं, आपको पता होना चाहिए. मैं सिर्फ अपनी मर्जी से आया हूँ और मैं अगर तुम्हारी हस्बैंड की लाइफ ना बचा सका तो मैं अपने आप को उसका मर्डर समझूंगा. What do you want of me? Good Proctor, I have gone this 3 months like our Lord into the wilderness. I have thought a Christian way. So I have sought a Christian way, यानी मुझे एक सही रास्ता मिला. For damnations doubled on a minister who counsels man to die. तो जो डैमनेशन है, जो क्रिश्चियन मिनिस्टर इंसानों को मरने देता है, उस पे दोहरी लानत हो जाती है. So I want to save myself and himself. It is no lie. You cannot speak of lies. It is a lie, sir. They are innocent. I hear no more of that. Hale, let you not mistake your duty as I mistook my own. मैं तो अपनी ड्यूटी भूल गया था, तुम ना भूलना. I came into this village like a bridegroom to his beloved, bearing gifts of high religion. The very crowns of holy law I brought, and what I touched with my bright confidence, it died. कि मैं बड़े कॉन्फिडेंस से इस जगह पे आया था, जैसे एक दूल्हा आता है बड़ी शान शौकत से, प्रोटोकॉल से, लेकिन मैं जिस चीज को छूता गया वो मरती गई.
यानी उसके कहने का मतलब है कि ये स्टार्ट मेरी वजह से हुआ, टिट्यूबा को मैंने फोर्स किया, फिर उसके बाद ये सारा काम शुरू हुआ. And whether I turned the eye of my great faith, blood flowed up. Beware, goody proctor. Cleave to no faith when faith brings blood. It is mistaken law that leads you to sacrifice. Life, woman, life is God's most precious gift. No principle, however glorious, may justify the taking of it. I beg you, women, prevail upon your husband to confess. Let him give his lie. Quail not before God's judgment in this, for it may well be God damns a liar less, and then he throws his life away for pride. Will you plead with him? I cannot think he will listen to another. कि क्या तुम उससे रिक्वेस्ट करोगी? क्योंकि तुम्हारी बात मानेगा और किसी की नहीं मानेगा. तो उसे कहना चाह रहे कि वो कह देता है कि वो झूठ बोल दे, झूठ बोल के कोर्ट से बच जाए, अदालत उसे बचा लेगी, मतलब उसकी जान बच जाएगी. तो वो जो जान है वो खुदा का तोहफा है, और अदालत के सामने झूठ बोल के जान बचाना इस चीज से बेहतर है कि तुम अपनी जान को फजूल में, अपने गरूर में उसे लुटा दो या मर जाओ. तो वो चाह रहा है बेसिकली कि एलिजाबेथ प्रॉक्टर उसको कन्विंस कर ले, प्रॉक्टर को, कि वो कॉन्फेस करे, तो बेशक उसके आउटकम्स जो भी होते हैं कम से कम जिंदा रहेगा. Elizabeth, I think that he be the devil's argument with climatic depression. Woman, before the laws of God, here we are as swine. We cannot read his will. कि खुदा के कामों के सामने हम कुछ भी नहीं है. I cannot dispute with you. I lack learning for it. कि मेरा इतना इल्म नहीं है. Danforth, Goody Proctor, not summoned here for disputation. But there be no wifely tenderness with you कि अगर तुम्हारे अंदर कोई मोहब्बत नहीं रही अपने बंदे के लिए. He will die with the sunrise, your husband. So वो मर जाएगा वो. Do you understand it? What say you? Will you content with him? Are you stone? क्या तुम पत्थर हो चुकी हो? I tell you, women, had I no other proof of your unnatural life, your dry eyes now would be sufficient evidence that you delivered up your soul to hell. A very ape would weep at such calamity. Have a devil dried up any tear of pity in you? Take her out. It profit nothing she should speak to him. किसका उससे बात करने का कोई फायदा नहीं है. और उससे कह रहे कि तुम्हारा बंदा मरने लगा और तुम पत्थर की तरह खड़ी हो, तुमसे बोला भी नहीं जा रहा. मतलब ये तुम्हारा इस वक्त ये केस ना होता प्रेगनेंसी का, तो मैं मान लेता कि तुम डेवल हो या डेवल के साथ हो. क्योंकि कोई एप यानी कोई बंदर भी रो पड़ता, कोई जानवर भी रो पड़ता उसके ऊपर, अगर उसके स्पाउस के ऊपर ऐसा जुल्म होने लगता. तुम तो बिल्कुल ही पत्थर होके बेजान खड़ी हो, एक आंसू नहीं तुम्हारे अंदर. Let me speak with him, Excellency. With hope you will strive with him. You will plead his confession, will you not? I promise nothing. Let me speak with him. कि मुझे उससे बात करने दो, फिर देखते हैं. So, एक आवाज आती है इतनी देर में, feet on stone. ये आवाज आती है जैसा किसी को घसीटा जा रहा है. चेन्स आ रही हैं, चेन्स की आवाज आ रही है. So John Proctor enter होता है. Hail, pray, leave them, Excellency. Danforth, Mr. Proctor, you have been noticed, have you not? Proctor is silent. I see light in the sky, mister. Let you counsel with your wife, and may God help you turn your back on hell. So, Excellency, yet. So उसे चुप करा के निकल जाते हैं. So here, Paris. If you desire a cup of cider, Mr. Paris, I'm sure I. So Proctor से बड़ी cold नजरों से देखता है. So God lead you now. चला जाता है बाहर. So Proctor उसकी तरफ चलता है. He halts, रुकता है, और वो फिर बड़े एक मिक्स किस्म के इमोशंस उसके अंदर आ रहे हैं. उसका हाथ पकड़ता है, हाथ थपथपाता है, और चूंकि वो कमजोर हो चुका है, खड़े होकर वो बैठ जाता है. वो भी उसकी तरफ मुंह करके बैठती है. द चाइल्ड, जो बच्चा है तुम्हारे अंदर, उसका क्या हाल है? इट ग्रोज, कि वो ठीक है, बड़ा हो रहा है. There's no word of the boys, और जो बच्चे घर पे हैं वो. They're well. Rebecca Samuel keeps them. Rebecca का जो Samuel है वो उनकी हिफाजत कर रहा है. They have not seen them. You have not seen them. तुम नहीं मिली? नहीं. You marvel, Elizabeth. क्या चीज हो तुम? Elizabeth, you have been tortured. तुम पे जुल्म हुआ? Aye. They come for my life now. और अब वो मुझे मारने आए. I know it. None. Have yet confessed? None मतलब के क्या किसी और ने confess नहीं किया? There be many confessed.
किया तो बहुत लोगों ने. Who are they? There be 100 or more. They say good ballad is one, is a good kind is one, they be kind. इस तरह के लोगों ने, यानी बिल्कुल सड़क छाप लोगों ने. रबीका, नॉट रेबिका, क्योंकि एक दूसरे की हिम्मत बने हुए हैं. रेबिका मार्था की, मार्था जो है वो जाइल्स की, जाइल्स जो है प्रॉक्टर की. सो उसने नहीं किया, नहीं. So she's on foot on she's 1 foot in heaven now. Not may hurt her more. कि वो तो वैसे ही कब्र में पाँव लटकाए बैठी है, तो ये चीज उसे तकलीफ नहीं दे रही. And Giles, you've not heard of him. तुमने कब सुना नहीं उसके बारे में? I have not heard where I'm kept. यहाँ पे मैं उधर बातें नहीं पहुंचती. Giles is dead. मर गया वो. He looks at her incredulously. When were he hanged? कब मरा? कब उसे फांसी पर लटकाया गया? Quite factually, he was not hanged. He would not answer aye or nay in the indictment, for if he denied the charge, they would hang him surely and auction out his property. So he stand mute and died Christian under the law. So his sons will have his form. It is the law, for he could not be condemned a wizard without the answering the indictment, aye or nay, कि उसने हाँ या नहीं किया. और लॉ ये कहता है कि अगर आप खामोश हो और आपको इस तरह मार दिया जाता है तो फिर आपकी प्रॉपर्टी जो है उसे ऑक्शन नहीं किया जाएगा, बल्कि वो आपके बच्चों को जाएगी. तो उसे पता था ना मार तो देना ही है, तो उसने ना हाँ की ना की, और उसकी प्रॉपर्टी उसके बच्चों को चली गई. तो इस लिहाज से बड़ा वो लॉ का एक्सपर्ट था, तो सियाना रहा. देन हाउ डज ही डाई? तो फिर वो हैंग नहीं किया, तो फिर क्या किया उसको? दे प्रेस हिम जॉन, वजन दे के. प्रेस, great stones they lay upon his chest until he pleads, aye or nay. With a tender smile, they say he gave them but 2 words. Some more weight, he says, and died. तो वो जितना वजन डालते रहे वो आगे से ये कहता था more weight. वो सिर्फ यही बोला कि और वजन डालो, और वो मर गया. Numbed, more weight, aye. It were a fearsome man, Giles स्कोर के बड़ा एक हिम्मत वाला बंदा था. Proctor, I have been thinking I would confess to them, Elizabeth. What say you if I give them that? कि अगर मैं confess कर लूं तो? I cannot judge you, John. मैं तुम्हें judge नहीं कर सकती. What would you have me done? तुम क्या कहती हो मैं क्या करूं? As you will, I would have it. I want you living, John. That's sure. कि जारी बात है मैं चाहूंगी तुम जिंदा रहो. Giles' wife, have she confessed? कि उसकी wife ने confess किया? She will not. It is a pretense, Elizabeth. What? I cannot mount the gibbet like a saint. It is a fraud. I'm not the man. My honesty is broken, but I'm not a good man. Nothing spoiled by giving them that lie that were not rotten long before. कि मैं एक सेंट बन के हैंगिंग पे नहीं जा सकता, और मैं झूठ नहीं बोल सकता लोगों से कि मैं इनोसेंट साबित हो जाऊं और लाइक एक सेंट बन के छूट जाऊं, हालांकि मैंने गलती की है. अगर मैं विच क्राफ्ट में नहीं हूं, कम से कम एडल्ट्री में तो हूं. And yet you have not confessed till now. That speaks goodness in you. लेकिन तुमने witchcraft को accept नहीं किया, और ये तुम्हारी अच्छाई है. Spite on only keeps me silent. It is hard to give a lie to dogs. I would have your forgiveness, Elizabeth. कि मैं इन लोगों की बात को कोई वैल्यू नहीं देता, इनकी माफी को. मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ. It is not for me to give, John. I am, यानी मैं तो तुम्हें यहाँ से आजाद नहीं करा सकती. I would have you see some honesty in it. Let them that never lie die now to keep their souls. It is pretense for me, a vanity that will not blind God nor keep my children out of the wind. What say you? कि मैं अगर सच बोल के बच जाता हूं तो ये एक तरह से दिखावा है, और ये एक तरह से बिल्कुल यानी मैं गलत कर रहा हूँ. John, it come to naught that what I should forgive you, or if you will not forgive yourself. It is not my soul, John, it's yours. ये मसला तुम्हारी रूह है. Only be sure of this, for I know it now. I know it now. Whatever you will do, it is a good man does it. I have sins of my own to count. And it needs a cold wife to prompt lechery. कि मेरे अपने गुनाह बड़े, और ये बड़ी यानी हिम्मत चाहिए खातून को अपनी मोहब्बत मार के, क्योंकि वो अपने बंदे पे इल्जाम लगाए लेचरी का. Enough, enough.
Better you should know me. I will not hear it, I know you. You take my sins upon you, John. No, I take my own. John, I counted myself so plain, so poorly made. No honest love could come to me. Suspicion kissed you when I did it. I never knew how I should say my love. It were cold house I kept. Athron आता what say you, Proctor? The sun is up soon. Elizabeth, do what you will, but let not be your judge. There be no higher judge under the heaven than Proctor is. Forgive me. कि तुम्हारे अंदर खुद एक जज बैठा तुम्हें जज करने के लिए उससे बड़ा कोई जज नहीं है. Forgive me, John. I never knew such goodness in the world. कि जितनी तुम्हारे अंदर अच्छाई है वो मुझे पता कि कहीं और नहीं है. Proctor turns from her to Hawthorne. I want my life. मैं जिंदा रहना चाहता हूँ. Electrified, surprised, you will confess yourself. I'll have my life. कि मैं जिंदा रहना चाहता हूँ. अब यहाँ पे क्या बेसिकली कि वो अगर वो इसलिए जिंदा नहीं रहना चाह रहा कि वो वाकई जिंदा रहना चाहता है. वो इसलिए जिंदा रहना चाह रहा है या कॉन्फेस करना चाह रहा है क्योंकि वो जो इसने किया सारा कुछ वही बात कि अगर वो इनोसेंट बन के छूट जाता है और यानी झूठ बोल देता है तो इसकी लाइफ बच जाएगी. लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि अगर वो रेबिका नर्स की तरह कॉन्फेस नहीं करता और उसे लटका दिया जाता है तो वो एक तरह से लोग उसे याद करेंगे कि यार ये बंदा वाकई इस डेविल से लिंक नहीं था और एंड तक नहीं माना. तो कह रहे मैं इतना सेंट बनने की मुझे जरूरत है जब मैं सेंट हूं ही नहीं. मैं तो गुनाहगार इंसान हूं और सारी उम्र रहा तो मैं लोगों को दिखावा क्यों करूं इस तरह का कि मैं नेक बनने का दिखावा करूं जबकि मैं नेक नहीं हूं. He will confess. Proctor will confess. Why do you cry it? It is evil. It's not. It is evil. In terror, weeping. I cannot judge you, John. I cannot. Then who will judge me? God in heaven? What is Proctor? What is John Proctor? I think I'm no saint. Let Rebecca go like a saint. For me, it's fraud. कि Rebecca को जाने जो वो वाकई डिजर्व करती है लेकिन मेरे लिए इस तरह मरना और लोगों की नजर में जिंदा रहना ये फ्रॉड होगा. I'm not your judge. I cannot be. Do as you will. Do as you will. Would you give them such a lie? Say it. Would you ever give them this? You would not. If tongues of fire were singing, you would sorry singeing. You would not. कि अगर तुम्हें जो है ना आग के ऊपर बिठा दी जाए तो तुम झूठ नहीं बोलोगी और इट इज इवल गुड देन इट इज इवल एंड आई डू इट. और मैं जो कर रहा हूँ वो गलत कर रहा हूँ झूठ बोल रहा हूँ तो मैं अगर मर जाऊंगा इसको एक्सेप्ट करके तुम पीछे लोगों को क्या बताओगे कि वो नेक बंदा था हालांकि मैं नेक नहीं हूं और तुम वो खातून हो जो झूठ नहीं बोल सकती. Danforth वो आ जाता है. Praise to God, man. Praise to God. You shall be blessed in heaven for this. Now then, let us have it. Are you ready, Mr. Shiva? तो वो पेपर निकाल लेता है कि जनाब इसको लिखो और बोलने के लिए तैयार हो जाओ. Why must it be written? तो उसे कोल्ड एंड कोल्ड हॉरर वो उनकी एफिशिएंसी देख के उसे हो रहा होता है. लिख क्यों रहे हो? Why for the good instruction of the village कि लोगों को हम बता सकें. Mr. This shall be posted on the church door. इसको चर्च डोर पे लगाएंगे. Where's the marshal? Marshal, hurry. Now then, Mister, you will speak slowly and directly to the point, Mr. Shiva's sake. Mr. Proctor, have you seen the devil in your life? Mr. Proctor's jaw locked. Come on, man. There is light in the sky. The town waits at the scaffold. के फांसी के फंदे के पास तख्ते के पास लोग खड़े हैं. सुबह हो चुकी है. I would give out the news. Did you see the devil? कि तुमने devil को देखा? I did. Praise God. Subhanallah. Danforth. And when he come to you, what were his demand? Did he bid you to do his work upon earth? क्या उसने तुमसे कहा कि तुम उसका काम करो? He did. And you bound yourself to his service? Come in, woman. इतनी देर में Rebecca nurse आती है. So Rebecca, brightening as she sees Proctor, खुश हो जाती है उसको देखा. John, you're well. Proctor, Danforth, courageous man, courage, man, courage. Let her witness your good example, that she may come to God herself. कि उसके सामने example बन रहे हो, अच्छी बात है ताकि वो भी खुदा की तरफ आए. Now here it could nurse say on, Mr. Proctor, did you bind yourself to the devil's service? Rebecca astonished. Why, John? कि John, तुम क्यों कर रहे हो इस तरह? Proctor, through his teeth, his face turned from Rebecca. I did.
Now, women, you surely see it profit nothing to keep this conspiracy any further. Will you confess yourself with us, with him? Oh, John, God send his mercy on you. I say, will you confess yourself, good nurse? Rebecca, why? It is a lie. It is a lie. How may I damn myself? I cannot. कि मैं अपनी आखिरत क्यों खराब करूं? मैंने पहले भी नहीं किया, मैं अब भी नहीं करूंगी. Mr. Proctor, why the devil came to you? Did you see Rebecca nurse in his company? Come on, man, take courage. Did you see her with the devil? Almost inaudibly. No. अब वो उसके मुंह से उगलवाना चाह रहे हैं. Did you see her? Did you ever see her sister, Mary Easter, with her the devil? No, I did not. Danforth, did you ever see Martha Corey with the devil? I did not. Did you ever see anyone with the devil? I did not. Proctor, you mistake me. I'm not empowered to trade you lie for a lie. You have most certainly seen some persons with the devil. Proctor said, Mr. Proctor, a score of people have already testified that they saw this woman with the devil. कि बहुत सारे स्कोर कहते हैं 20 people कि 20 लोगों ने बताया कि उन्होंने रेबिका को डेविल के साथ देखा. तुम किस तरह कह सकते हो तुम नहीं देखा? Then it is proved. तो फिर तो ये साबित हो गया, मैं क्यों कहूं? Why must you say it? Why? You should rejoice to say it. Your soul is truly purged of any love for hell. कि ये तो तुम्हें खुश होकर कहना चाहिए कि तुम्हारी रूह के अंदर से जहन्नम की मोहब्बत निकल गई. They sing to go like saints. I like to spoil their names. I like not to spoil their names. मैं लोगों के नाम खराब नहीं करना चाहता. Danforth, Mr. Proctor, do you think they go like saints? Proctor, this woman never thought she'd done the devil's work. कि ये औरत कभी भी devil का काम नहीं कर सकती. Look, you sir. I think you mistake your duty here. It mattered nothing what she thought. She is convicted of the unnatural murder of the children, and you are for sending out your spirit upon Mary Warren. Your soul alone is the issue here, mister, and you will prove its whiteness. Oh, you cannot live in a Christian country. Will you tell me now what person conspired with you in the devil's company? To your knowledge, it was Rebecca Nursever. I speak my own sins. I cannot judge another. I have no tongue for that. It is enough he confessed himself. हेल कहता चलो उसने खुद तो confess कर लिया ना, बात खत्म करो. Let him sign it. Let him sign it. It's a great service, sir. It's a weighty name. It will strike the village that Proctor confess. I beg you let him sign. Then the sun is up, Excellency. कितना ही बड़ा इतना मशहूर बंदा इंपॉर्टेंट बंदा साइन कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, तो विलेज वालों को हिलाने के लिए काफी है. Danforth, give to him. Come, man, sign it. Proctor, you will have all witness it. It is enough. तुम लोगों ने इसको देख लिया ना, बात होगी. मैंने एक्सेप्ट कर लिया तुम्हारे सामने, तुम 5-6 लोगों ने देख लिया. You will not sign it. तुम साइन नहीं करोगे. You will have witnessed it. What more is needed? तुम लोगों ने इसकी गवाही दे जो दी है, तो फिर क्या जरूरत है? Do you support with me? You will sign with your name, or it is no confession, mister. His breast heaving with agonized breathing. Proctor now lays paper down and signs his name. Praise be to the Lord. के बड़ी अच्छी बात होगी, मजा आ गया. Danforth, अभी पेपर उसने अपने पास रखा है और वो भी उसको दिया नहीं. तो इतनी देर में डैनफोर्थ प्रॉक्टर को पकड़ने की कोशिश करता है, उसके पेपर को, लेकिन प्रॉक्टर उसको ले लेता है, अपने पास रख लेता है. डैनफोर्थ, इफ यू प्लीज सर कि ये पेपर दे दो. नो मिस्टर प्रॉक्टर, आई मस्ट हैव इट, कि मेरे पास होना चाहिए. नो आई हैव साइंड इट. यू हैव सीन मी मैंने आपके सामने इसको साइन किया. इट इज डन. यू हैव नो नीड फॉर इट. अब आपको इसकी जरूरत नहीं है. आपने मुझे मारना है ना, तो मैंने साइन कर दिया. प्रॉक्टर, द विलेज मस्ट have proof that कि village के पास proof होना चाहिए. Damn the village, लानत भेजो. I confess to God and God has seen my name on it. It is enough. No sir, it is. You came to save my soul, did you not? Here I have confessed myself. Is it enough? You have not confessed. I have confessed myself, and there is no good penitence but it be public. God does not need my name nailed upon the church. God sees my name. God knows how black my sins are. It is enough. खुदा ने मुझे देखा, खुदा ने मेरे घिनौने सिंस देखे.
ये काफी है। खुदा ये नहीं चाहता कि मेरे नाम का आप ढोल बजा के रख दें और चर्च के ऊपर मेरा नाम गाड़ दें ताकि लोगों को पता लगे। मिस्टर प्रॉक्टर, you will not use me. I'm no Saraguda Tituba. I'm John Proctor and you will not use me. It is no part of salvation that you should use me. कि ये कोई salvation नहीं है, ये कोई आम बंदा नहीं हूं मैं जिसको तुम इस्तेमाल करो। I do not wish to. I have 3 children. How may I teach them to walk like men in the world and I sold my friends? कि मैं अपने बच्चों को क्या तरबियत दूंगा जब मैं खुद अपने दोस्तों को बेच के आया हूँ। You have not sold your friends. Beguile me not, I'm blacken all of them when it is nailed to the church the very day they hang for silence. मेरी वजह से कई लोग मरे जिनका नाम तुम्हें दिया गया, तुमने उन्हें अदालत में बुलाया, मरवा दिया, नाम उनके बाहर टंग दिए। Mr. Proctor, I must have good and legal proof that you, मेरे पास अच्छा प्रूफ होना चाहिए कि तुमने कॉन्फेस किया। You're the high court, तुम तो इतने बड़े एक जज हो। Your word is good enough, तुम्हारी अल्फाज, तुम्हारी जुबानी काफी है। Tell them I confess myself. Say Proctor broke his knees and wept like a woman. Say what you will, but my name cannot. मैं अपना नाम बाहर नहीं जाने दूंगा। हाँ, तुम जो मर्जी कहना शुरू कर दो, कह दो प्रॉक्टर एक खातून की तरह रोया, अपने घुटनों पे बैठ गया, गिड़गिड़ाया। Is it the same? Is it not? If I report it to you, you sign to you? No, it's not the same. What others say and what I sign to, it's not the same. Why? Do you mean to deny this confession when you're free? I mean to deny nothing. कि क्या तुम इस पे जब सही साइन नहीं कर रहे, लोगों को पता नहीं चल रहा, तो तुम आजाद हो जाओगे, तो क्या तुम इस चीज पे मुकर जाओगे कि तुम्हारा काम ही नहीं था क्योंकि लोगों के पास प्रूफ नहीं गया इस चीज का? I mean to deny nothing. Then explain it to me. Why will you not let? Because it is my name. ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइंस है, बड़ी प्यारी लाइंस है। Because it is my name. Because I cannot have another in my life. Because I lie and sign myself to lies. Because I'm not worth the dust on the feet of them that hang. How may I live without my name? I've given you my soul. Leave me my name. कि मेरा एक ही नाम है, दोबारा ये हासिल नहीं होगा। ये नेकनामी जो मेरी विलेज में है वो दोबारा नहीं आएगी। जो लोग मर रहे हैं, मैं उनके कदमों की धूल भी नहीं, मैं उनके कदमों की खाक भी नहीं। तो मैं अगर उनको भी खो बैठूं और अपना नाम भी खो बैठूं तो मैं जिंदा कैसे रहूंगा लोगों में? कि मैं ना अच्छू में रहा ना बुरों में रहा। तो सोल तो मेरी तुम लोग ले ही चुके हो, कम से कम मेरा नाम मेरे पास रहने दो। Danforth, is that document a lie? And if it is a lie, I'll not accept it. What say you? I'll not deal in lies, mister. You will give me your honest confession in my hand, or I cannot keep you from the rope. What way do you go, mister? या तो कन्फेशन लिख के दो या फिर फांसी पे चढ़ो। His breast heaving, his eyes staring, Proctor tears the paper and crumbles it and then weeping in fury, butt erect. वो पेपर को फाड़ देता है और बिल्कुल उसे फाड़ के तोड़ मरोड़ देता है। तो वो जो है परेशान हो थे। Marshall, Proctor, man, you will hang. You cannot save yourself. I can. And there's your first marvel that I can. You have made your magic now. For now I think. तो यहाँ पे ये देख रहे हैं प्रॉक्टर को और उनको अपनी फेट के पास लेके जाया जा रहा है। ये मुख्तलिफ लोग हैं इसके साथ। ये रेबिका नर्स है लेफ्ट पे, राइट पे आई गेस मार्था हो रही होगी। I see some shred of goodness in John Proctor, not enough to weave a banner with, but white enough to keep it from such dogs. Give them no tear. Tears pleasure them. Show honor now. Show a stony heart and sink them with it. So यहाँ पे प्रॉक्टर जो है वो कह रहा है कि जी अब फर्स्ट टाइम मुझे अपने अंदर थोड़ी सी अच्छाई नजर आ रही है। पहली दफा मुझे अपने अंदर कुछ बेहतरी नजर आ रही है, अच्छाई नजर आ रही है कि मैंने कोई अच्छा काम किया। वो एलिजबेथ को भी कहते हैं इनको रो के ना दिखाना, इनको जो है ये अपने दुश्मनों को अपने जख्म मत दिखाओ। So let you fear nothing. Another judgment waits us all. किस जजमेंट के बाद एक और जजमेंट है जो हमारा वेट कर रही है और वो हमें यकीनन बख्श देगी। Hang them high over the town. Who weeps for these weeps for corruption. इनको लटका दो, जो इनके लिए रोएगा फजूल रोएगा। तो यहाँ पे बेसिकली Rabika, I have no breakfast. Come, man. Paris,
Go to him. Could you proctor? There is yet time. Paris. Go to him. Proctor. Proctor. Hail. Women. Plead with him. Women, it's pride, it's vanity. ये जो कह रहा है ये गरूर है. छोड़ दो इस चीज को. Be his helper. What profit him to bleed? Shall the dust praise him? मरने से क्या फायदा? क्या जो कब्र है वो उसकी प्रेज करेगी? Shall the worms declare his truth? जो कब्र की कीड़े इसका truth सामने लेके आएंगे. Go to him, take his shame away. Elizabeth, he have his goodness now. God forbid, I take it from him. खुदा खुदा करके उसको एक उसने एक अच्छी एक रास्ता अपनाया कि मैं उससे वो रास्ता छीन लूं. तो बेगम को खैर यानी उसने उसको एक्सेप्ट तो कर लिया उसकी मौत को, और उसे लगा कि इसका बंदा वाकई अब जो इसने डेथ को अपनाया है तो वाकई वो शर्मिंदा है अपनी बात पे, और वो इसने भी उसको माफ कर दिया यहाँ पे, और वो कह रही कि वो उसने माफी मांग ही ली है तो मैं दोबारा से उसको गुनाहगार कर दूं. और बाकी अंदर खुदा जाने के एलिजाबेथ में भी, यानी ये तो जोक्स अपार्ट के में भी उसका किसी के साथ चक्कर चला, उसने शुक्र किया कि अपना बंदा निकल गया रास्ते में से. But this is not truth. Elizabeth loved him and he loved her. So the final drum crash, ये drum roll final होता है जब ड्रम बजाया जाता है और लोगों के सर पे फांसी का फंदा डाल दिया जाता है. Then heightens violently, और फिर वो बड़ा तेज होता है. Hail weeps in frantic prayer and the new sun is pouring in upon her face, and the drum rattles like bones in the morning air. और ड्रम ऐसे बजा होता है जैसे हड्डियां खड़क रही होती हैं. सो दैट मीन्स कि किलिंग टाइम इज हियर. और उसके बाद प्रॉक्टर, मार्था कोरे और रेबिका नर्स इनको फांसी दे दी जाती है. सो ये कुछ क्वेश्चंस हैं. यू कैन सी कि Act 4 opens. What is to take place at daybreak? Why has Reverend Hale returned to Salem? What does Paris say Abigail has recently done? What does Danforth want John Proctor to do? So इस तरह के क्वेश्चन इस टेक्स्ट बुक के सारे एक्ट्स के एंड में मौजूद हैं. So I hope you have now enough knowledge of the Crucible, and my lectures remain beneficial for you. So thank you very much. Stay tuned.